कुंज विहार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
एवं ईश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदी हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। I would like to welcome all the devotees for Saturday evening class. आज सभी शनिवार के संध्या में सभी भक्तों का स्वागत है और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हम सबको श्रीमान नरसिंह चंद्र प्रभु से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक पर। और प्रभु जी से हम सब बहुत समय से उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, उनका संग प्राप्त होता है। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु जी और उनकी जो अनन्य रुचि है श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के प्रति, स्वयं की जो उनकी अपना अध्ययन है, पठन श्रवण और बहुत विनम्र भाव से वो रहते हुए, विनम्रता जो है वो बहुत अच्छी पहचान है किसी भक्त के उन्नत होने की। विद्या ददाति विनयम, और प्रभु जी के आचरण से हम लोग को वो सदैव सीखने को मिलता है। सो ऑलवेज प्रभु टीचर्स बाय हिज ओन एग्जांपल, बाय हिज ओन बिहेवियर, कंडक्ट, that how we should be humble even though he's there for so many years in this movement, but always he behaves like he had just come, the neophyte devotee. So that is his great qualities जो हम सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और प्रभु जी का सदैव जो संग हम लोग को रहता है वो बहुत ही सुंदर रूप से, जब भी हम कथा श्रवण करते हैं प्रभु के मुखारविंदों से, तो उनका वो पूरा अनुभव उसमें हमें दिखता है उनके कथा में। और ये चीजें वो केवल अनुभव से ही आती हैं। वो कितना भी पठन अध्ययन कर लें हम लोग, कुछ चीजें हैं जो अनुभव से ही आती हैं। तो इसलिए जब ऐसे अनुभवी भक्तों से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसको हमको परम सौभाग्य समझना चाहिए। सो लेट्स वेलकम प्रभु जी ऑल टुगेदर। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं आज या जो भागवत में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। भक्तों का भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। प्लीज प्रभु जी। Hare Krishna Dandavat to all Prabhuji, you and Yasmin Prabhuji, all of the assembled Vaishnavas and the Vaishnavas. तो सभी भक्तों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी भक्त उपस्थित वो प्रणाम कर रहे हैं। यस प्लीज। Today I welcome all devotees from Saturday evening satsang Srimad Bhagavad-Gita cities. Today reading from Bhagavad-Gita cities 9th chapter, sloka number 30. तो आज शनिवार 9वें अध्याय के 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Reading from the Bhagavad-Gita cities 9th chapter, sloka number 30. Abhichet suduracharo bhajade mamananyabhag sadureva samandavya samyak vyavasito hi saha. Abhichet suduracharo bhajade mamananyabhag साधुर्येव समन्दव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः। अभिषेत्सु दुराचरो भजते मामनन्यभाक् साधुर्येव समन्दव्या सम्यक्
vyavasido hi sa. Prabhuji, want to recite it? Hare Krishna. सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यशोमती प्रभु जी। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। Word by word meaning. Abhi even said if Suduracharaha, one committing the most abominable actions, Bhajade is engaged in devotional service, mom, unto me, Ananya path without deviation, Sadhu, a saint, eva, certainly, sah, he, mantavyaha, is to be considered samyak, completely, vyavasidah, situated in determination, he, certainly, sa, he. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Purport: the word Sudurachara used in this verse is very significant, and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of the society and state, certainly there are different activities even for the devotees. In connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Besides this, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in his constitutional position, and they are technically called devotional service. Now, in the conditional state, sometimes devotional service and conditional service in relation to the body will parallel one another, but then again sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically, but such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated with his heart, purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes become ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such a
An occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. For as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with the determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position. Even if by chance or accident he is found to have fallen. The word sadhureva is saintly or very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down. And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. In the Narasimha Purana, the following statement is given: Bhagavati cha hara ananya cheda purusha milenobi vraja vrajade manushya nahi sasa kalusha chabi kadachit timira parabhavadam ubaidi chandra. The meaning is that even if one fully engages in the devotional service of the Lord, he is sometimes found engaged in abominable activities. These activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connections. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall down. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs, as previously explained. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. Hare Krishna. Prabhuji, read in the... यस प्रभु जी। यशोमती प्रभु जी, प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु? ओके प्रभु जी, यदि आप बोले तो मैं भी पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य:
इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन का कुछ ऐसा ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक हैं। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावन्य चेता वृषमलिनो अपि विराजते मनुष्यः न हि शशकलु सच्छविः कदाचित् तिमिरपरा भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधुपत से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय
कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् तदादे सौदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त सप्तपांजन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री समाधि देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च गुरुवासुदेवशब्दविदानंद नमो विश्वपालाय सुप्रशाय बुधेशिमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमो विश्वपालाय राय बुधेशिमदे भक्तिवे नमो नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। I welcome all the Vaishnavas and Vaishnavis who are assembled this today evening Srimad Bhagavad-Gita class as it is. प्रभु जी आप करना चाहेंगे अनुवाद प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु जी, आप कंटिन्यू करें। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता के इस अध्ययन के सत्र में। I am not qualified doing this service to the Bhagavad Gita because it is great literature given by the Lord. So I request all the Vaishnavas and Vaishnavis, please bless me so that I can do little seva to the Bhagavad Gita with my little knowledge. तो प्रभु जी बहुत विनम्र भाव से बोल रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि भगवद गीता के ऊपर कुछ बोल सकूं, क्योंकि ये एक महान शास्त्र है, भगवान के द्वारा स्वयं बोले गए हैं। इसलिए आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवी से आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे कि मैं यह सेवा उचित रूप से कर सकूं। This Bhagavad Gita, the great literature, it should be heard from the self-realized person who already realized the Supreme Lord. They can give this very good explanation, especially this today's Vaha. When I read, I was very much hesitation, even though I tried my level best. Please forgive me any offenses in my service. तो भगवद गीता जैसे शास्त्रों का श्रवण आत्म साक्षात्कारिक भक्त के माध्यम से करना चाहिए। तो जब मैं श्रवण कर रहा था, जब मैं श्लोक के ऊपर मनन कर रहा था, तो मैं स्वयं देखा कि ये बहुत गंभीर श्लोक हैं। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे कि मैं उचित रूप से इस श्लोक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। Hare Krishna. Today, this Bhagavad Gita, we are discussing 9th chapter, sloka number 30. This Bhagavad Gita, actually it is spoken by Lord in the battlefield of Kurukshetra to Arjun. So it is called Bhagavad Gita, Song of God. तो आज हम लोग 9वें अध्याय के 30वें श्लोक पर अध्ययन कर रहे हैं, और ये भगवद गीता जिसको भगवान का गीत कहा जाता है, ये
कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहां पर, जहाँ पर धर्म युद्ध हो रहा है, वहां पर ये ज्ञान दिया गया। It is also called Gita Upanishad because it is the essence of all the Upanishad. इनको गीतोपनिषद भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी उपनिषद का सार भी है ये। The Bhagavad Gita proper right, it will be a great, the Bhagavad Gita will be a great mystery unless we approach the Bhagavad Gita through Guru Parampara system. प्रभुपा जी कहते हैं कि भगवत गीता एक रहस्य बन के रह जाता है अगर हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आश्रय लेकर के इनका अध्ययन नहीं करते। Today's this chapter titled Most Confidential Knowledge. When we think the whole Bhagavad Gita, it is a confidential knowledge because all the persons cannot easily understand, even though we have book and everything available. By reading on our own, we cannot understand fully. तो आज के अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, और प्रभु जी कह रहे हैं कि पूरा भगवत गीता ही देखा जाए तो गुह्य ज्ञान है, क्योंकि ये पुस्तक रहते हुए भी और सबके पास उपलब्ध होते हुए गीता भी, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। So Lord says in the Bhagavad Gita there are confidential knowledge. First he says in the chapter 2nd and 3rd the difference between the body and the soul. That is confidential knowledge. Then the 7th chapter and 8th chapter, Lord gives the transcendental knowledge and knowledge about his abode, where he is situated. It is the more confidential knowledge. And in this 9th chapter, he gives the devotional service to him is the most confidential knowledge. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे तीसरे अध्याय जिसमें वो आत्मज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें आत्मा का ज्ञान और उसके पश्चात फिर बुद्धि योग भी प्रस्तुत कर रहे हैं वो तीसरे अध्याय में। तो उसको वो कह रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान है, और उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए क्रम से और विशेष रूप से 7वें और 8वें अध्याय को गुह्यत्तर ज्ञान बोला गया है, जहां पर कि भगवान स्वयं भगवत प्राप्ति और परम सत्य का ज्ञान भी दे रहे हैं 7वें अध्याय में, और भगवत प्राप्ति 8वें अध्याय में। तो इस प्रकार से वो उसको गुह्यतर ज्ञान कह रहे हैं, और जहां पर अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना या उनकी प्राप्ति अनन्य भक्ति के माध्यम से, उसको भगवान परम गुह्य ज्ञान जो आज के अध्याय में हमको बता रहे हैं। In this 9th chapter, full explains about the glories of devotional service. First it is called Raja Vidya, the king of knowledge, and then it is easy to perform. Anybody can do, everywhere can do, irrespective of their situation and their education and the caste, greed, and the other things. Another thing is, it is gives highest perfection, the love of Godhead. There is no loss in this process. Whatever level we progress will be continued from next birth. Another thing, the devotees are directly controlled by the Lord. और इस अध्याय में, पूरे अध्याय में भगवान जो है भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति योग की महिमा का वर्णन शुरुआत में कहते हैं कि ये राज विद्या है, ये ज्ञान, और इसको बड़े सुखपूर्वक और
किसी भी अवस्था में कहीं पर भी इसको कर सकते हैं और भगवान की पूर्ण आश्रय में रहते हैं वो भक्त। तो इस प्रकार से ये आरंभ भी कर रहे हैं भक्ति का गुणगान करते हुए। A living entity obtains a human form of life after rotating in the 84 lakhs of species of life. So the human form of life, it is rare opportunity. So we should use it is for the purpose for what it is given. That is really self-realization or becoming the Krishna conscious. तो 84 लाख योनि में भ्रमण करने के पश्चात ये मनुष्य देह प्राप्त होता है, जो कि बहुत दुर्लभ है। और इसलिए इस दुर्लभ देह में आने के पश्चात जीव को ये प्रयास करना चाहिए कि वो भक्ति योग, आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, ज्ञान, और विशेष रूप से ये कृष्ण भावना भावित ज्ञान, ये ग्रहण करें। It is said in the Bhagavatam, Adado Brahma Jigyasa. After coming to the human form of body, we should inquire about the Supreme Personality of Godhead. Who is God? Who am I? And what is the relationship between me and the God? Everything we should ask. तो वेदांत सूत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य योनि में आने के पश्चात हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए अपने बारे में, जीव के बारे में, कि हमारा तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है। इसके बारे में जिज्ञासा हम इसी योनि में कर सकते हैं। In the material body, we are conditioned stage and must act based on the three modes of material nature. और इस प्रकृति के संपर्क में आने के पश्चात हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में बद्ध रहते हैं। Bhagavad-Gita, that chapter is said, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasa Ahangara Mudatma Kartaham. This material body is controlled by 3 modes of nature. Normally, the person thinks I am acting like this. तो 30 अध्याय में बताया गया भगवत गीता में कि किस प्रकार से ये भौतिक शरीर जो है, भौतिक जगत में आने के पश्चात प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करते हैं। और जो अहंकार से विमोहित जो जीव होते हैं वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। In which mode the body is predominated, in that mode, whether it is tamo or rajas, means it is acts in the conditional stage and faces the consequences and suffers in this material world. तो किस प्रकृति के गुण के प्रभाव में है, उसी प्रकार से उनकी क्रिया प्रतिक्रिया जो है होती रहती है और उसी प्रकार से उनको फिर उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। When the mode of goodness is predominated, in that case, it identifies spiritual identity and engages in the spiritual activities. और जब सतोगुण के स्तर पर कम से कम होते हैं तो वो ये जिज्ञासा कर पाते हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझे यहाँ पर प्रकृति के ताप त्रय मुझे क्यों सता रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दार्शनिक विचार हैं ये कम से कम सतोगुण होने चाहिए, तब जाकर के आ पाते हैं। When it is acted in the mode of tamo, mode of passion, mode of ignorance, it acts in the conditioned stage, whereas in mode of goodness, it acts in the constitutional stage. तो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में जीव वो बद्ध अवस्था में कार्य करते हैं और
जब सतोगुण में आते हैं कम से कम, तब अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव आ पाते हैं। When we are coming in the devotional service, it is possible only by the association of the saintly persons, how those who are continuously engaged in the devotional service. और तब इस प्रकार से उसमें जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो उन्हीं के साथ में, भक्तों के संग में ही हम अपनी भक्ति में जो यात्रा है उसकी आरंभ उनके संग में ही हम कर पाते हैं। A person who is engaged seriously in the service of the Lord and is in the renounced order of life is called sadhu. तो जो भगवान की प्रेममयी सेवा में युक्त हैं और बिल्कुल विरक्त हैं संसार से, विषय से, उनको साधु कहा जाता है। He renounces everything, the home, comforts and friends, relatives and duties to all of them when coming in the devotional service. तो जब भगवान की भक्ति में युक्त होते हैं, तो जैसे जैसे उनकी भक्ति का क्रम बढ़ता है, वो सब कुछ का त्याग हो जाता है, उनसे सब कुछ से विरक्त हो जाते हैं। वो परिवार से, जन से, संबंधियों से, सबसे विरक्त हो जाते हैं। संसार की सभी चीजें सबको बांधती हैं संसार में, उससे वो विरक्त हो जाते हैं। Bhagavatam, it is says the qualification of sadhus, Didikshva, Karunika, Sugurda, Sarvadehinam, Ajada Sattva, Santa, Sadhava, Sadhubhushana is tolerant, merciful, friendly to all living entities, he has no enemies, is peaceful, abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से बताया गया है, भागवतम में बताया गया है इसको। कपिल बताते हैं कि क्या लक्षण होते हैं साधुओं के। उनके कोई शत्रु नहीं होते, वो बहुत करुण होते हैं, बहुत मधुर होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं और सभी के प्रति संभाव रखते हैं। तो इस प्रकार के आभूषणों से, इस प्रकार के गुणों से युक्त रहते हैं साधु। So we can sadhu say, therefore sadhu means a follower of, sincere follower of spiritual instruction and the seriously engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. और बहुत गंभीरता से वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हैं, विधि निषेध का, और पूर्ण रूप से भगवत चेतना से युक्त होते हैं। His main business is preaching to the all the conditional souls that want to be Krishna consciousness, to become Krishna conscious. और उनका जो मुख्य उनका उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से वो उनकी पूरी चेतना भगवान से युक्त हो और सबको वो कृष्ण भावनाभावित चेतना से खुद भी युक्त हो और सबको युक्त करें। He is not only thinking of his own liberation and also others. He is the most compassionate personality towards all the fallen souls. और वो केवल अपने ही मुक्ति के बारे में नहीं, वो सभी पतित जीवात्माओं के बारे में भी विचार करते रहते हैं और बहुत करुणामय होते हैं उनके प्रति। He is the well-wisher of all living entities, not only human beings but also other living beings, animals, and other things. और केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सभी जीवात्माओं के लिए वो बहुत ही उनके हृदय में करुणा होती है। Bhagavatam, it is says Sarvadehinam, which indicates all living entities who have accepted material bodies. भागवत में बताया गया कि सर्वदेही नाम, जो श्लोक अभी हमने पढ़ा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 21वां श्लोक, तो उसमें बताया गया कि वो सुहृदय सर्वदेही नाम, सबके प्रति उनके मन में सुहृद होते हैं, चिंतक होते। When the devotee is in the sadhu, is in devotional service, sometimes
we practice the devotional service. We are both in sometimes in conditional stage, sometimes in constitutional stage. It is go together parallel, sometimes one another oppose. Like this, it is when we are doing in the sadhana stage. तो साधना में जब अभ्यास में भक्ति युक्त होते हैं तो साधना में चूंकि शुरुआत की अवस्था होती है, शुरुआत में देखा जाता है कि उसके अंदर ये दोनों बद्ध अवस्था और स्वाभाविक, जैसा भी हमने श्रवण किया कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव और सतोगुण का प्रभाव, ये निरंतर उनके प्रति प्रतिद्वंद चलता रहता है, उनके बीच में प्रतियोगिता चलती रहती है। तो कभी वो बद्ध अवस्था में रहते हैं पूर्ण रूप से, कभी वो स्वाभाविक अवस्था में आते हैं। तो इस प्रकार की उनकी आपस में एक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद चलता रहता है, कह लीजिए आप। Srila Prabhupada writes in the purport, the devotee is always conscious which about his devotional service and his activities, so that it should not disturb his routine devotional service. प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भक्त सदैव अपने नियमित जो उनके कर्म हैं, जो नित्य उनके जो सेवा है, उससे वो सदैव अपने आप को स्मरण कराते रहते हैं, जिससे कि उनके इस नित्य सेवा में, उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आए। Because when we go out from the devotional service, that the progress that in the devotional service, it mainly depends upon our serious sadhana. तो ये गंभीर साधना के ऊपर हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो निर्भर करती है। भक्ति में जीवन में जहां पर भी हमने विराम दिया, भक्ति में सेवा में पूरी संभावना बनी रहती है कि हम जो है जिस पथ पर हैं वहां पर हमें विषण हो सकता है और हमें माया के प्रभाव में विषण आ सकता है। इसलिए बहुत गंभीरता की आवश्यकता है इस पथ पर। Sometimes, however, it may be seen that Krishna conscious person commits some sinful act which may be taken as most abominable socially or politically due to their material connection. तो भौतिक चेतना से युक्त होने के कारण हम लोग कभी जब देखते हैं कोई कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के जीवन में भी अगर कुछ ऐसे प्रभाव दिखता है उनके जीवन में, तो उसको हम लोग सामाजिक या राजनीतिक रूप से उनको देखना शुरू करते हैं। This is our engagement always both in the conditional and constitutional. Because of this conditional association may sometimes it is happening. तो ये आकस्मिक घटनाएं कभी कभी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे बताया गया कि साधक भक्त जो होते हैं वो दोनों अवस्था में, वो बद्ध अवस्था और स्वाभाविक अवस्था, तो बद्ध अवस्था में जब जब वो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में अगर है तो उसके कारण ये हो सकता है कि कुछ आकस्मिक ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। Such a temporary fall down does not qualify him if he is always disqualify him if he is always engaged in the devotional service. तो यदि वो भक्ति में रत रहते हैं सतत रूप से और रत हैं अगर, और ऐसा कोई जघन्यतम हो जाए उनसे कर्म, तो भी उनको पतित नहीं मानना चाहिए। So the Lord is being always continuously monitoring the devotee from the heart. So he purifies him and excuses him from that abominable act. और भगवान जो हृदय में स्थित हैं वो उनको इस प्रकार की घटनाओं से बचाते रहते हैं। भक्तों को जो साधना में रत हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, अडिग हैं अपने पथ पर, रक्षा भगवान करते हैं। It is confirmed in the Bhagavatam sloka sopadamoolam bhajada prayasya anya bhavasya hari paresha vikarma yacho padidam kadanjit dunodi sarvam hirdi sannivista. That means one who has this given up all the other engagement and has taken
full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. Indeed, if such a surrendered soul accidentally commits some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction to such a sinful acts. तो इस बात को नारद जी श्रीमद् भागवतम में वसुदेव जी को शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर कंफर्म करते हैं कि स्वपाद मूलम भस्त प्रियस्य त्यक्तान भावस्य हरि परीश। ऐसे श्लोक में आप बता रहे हैं वो कि विकर्म चोपतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, कि जो भगवान की सेवा में युक्त हैं, सब कुछ छोड़ करके अनन्य भगवान का शरण ग्रहण कर रखी है, भगवान के चरण कमल की सेवा में युक्त हैं, स्वपाद मूलम, तो उनसे भगवान उनके हृदय में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि कभी उनसे पाप होते ही नहीं सकता। लेकिन कभी अगर एक्सीडेंटली उनसे कुछ पाप हो भी जाए आकस्मिक रूप से, तो भगवान उसको, क्योंकि उनके हृदय में है, धुनोति हृदय सन्निविष्ट, उनके हृदय से उसके पूरे जो प्रतिफल है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसको निकाल देते हैं, और उनकी संभावना आगे फिर पाप करने की वो भी खत्म हो जाती है, उसको भी निकाल देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, ये नारद जी के द्वारा बताया गया। Srila Prabhupada write in the purport, the material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes become victimized. प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जो बंधन है या आसक्ति है, उसका प्रभाव इतना तगड़ा है कि कभी कभी योगी भी इसके अधीन आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। We can see from the example of Vishwamitra Muni and also Saubhari Muni, how when they are engaged in the meditation, become victimized by the material association. तो भौतिक कलमश इतना प्रबल रहते हैं कि भगवान की सेवा में लगे हुए योगी भी उसके जाल में आ जाते हैं। जैसा उदाहरण दे रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर कि संभौरी ऋषि, किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि, तो ये लोग भी जो है इसके अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि किस अवस्था पर रहने पर भी ये इसका प्रभाव जो है वो आ सकता है, अगर हम सतर्क नहीं है तो। But the Krishna consciousness is so strong that such a occasional fall down is at once is rectified. But this we can see from when Namacharya Haridas Thakur, when Maya Devi or other people come to disturb his sadhana, they become they are not disturbed, they become a devotees. लेकिन कृष्ण भावना भावित जो कृष्ण भावना अमृत है, ये इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार के जो आकस्मिक पतन है वो रुक जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, प्रभु उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि अजामिल जो है उनके समझ पे ऐसा स्थिति प्रकट हुई, लेकिन वो इतने गंभीर थे अपने आशय में कि वो बिल्कुल उनका पतन नहीं हुआ। So we should not deride a devotee who become accidental fall down from the devotional service. इसलिए किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हमें हास्य परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी आगे बताया लिखते हैं कि वो पूर्ण स्थित होते हैं और ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। Here it is said, the Lord himself, sadhu reva samandam. Even though if we do this abominable acts, we should consider he is sadhu, because he is situated in the continuous devotional service. तो भगवान यहाँ पर स्वयं उसको साधु रेवे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्लोक में, कि ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि अत्यंत प्रभावात्मक है, क्योंकि भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। Oh, this is the warning to the non-devotees. Because of this accident fall down of a devotee should not be derided. He should still be considered as a saintly person or sadhu.
तो विशेष रूप से ये अभक्तों को सावधान करने के लिए है कि उनको ऐसे आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए। If we are not following this rule, then we are disobeying the order of the Supreme Personality of Godhead. तो यदि कोई इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और भक्त के पतन पर हंसते हैं तो वे भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। So on the other hand, we should not misunderstood this, that the devotee in the transcendental service can act in any kind of abominable ways, acts. और ये भी महत्वपूर्ण है कि इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इस श्लोक का, कि नहीं ठीक है तो फिर भक्त अपने मनमाने ढंग से किसी प्रकार से भी वो व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। This verse mainly refers due to the accident fall down due to the strong power of material connections. ये श्लोक केवल जो है ये यहाँ पर बताया गया है कि जो आकस्मिक रूप से कोई जब जो माया का बहुत प्रभावशाली जो स्थिति प्रकट होती है और उससे आकस्मिक पतन होता है, उसके लिए कहा जा रहा है। So Prabhupada write, devotional service is more or less a declared war against the illusory energy of the Lord. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तिमय जीवन का अर्थ है कि माया के प्रति युद्ध की घोषणा। Because we mostly associate with the material energy, there is always possibility to fall down. और चूंकि जी हम सब सदैव यहाँ पर माया के संपर्क में रहते हैं, रजोगुण के संपर्क में रहते हैं, इसलिए पतन होने की संभावना सदैव बनी रहती है और हम सब च्युत होने की संभावना सदैव बनी रहती है। Here the Narasimha Purana sloka given an example, compared this devotee with moon. The spot in the moon is not disturb the devotion of the moonlight. Same like temporary fall down with the devotee who is engaged in the continuous devotional service is not affecting. तो यहाँ पर नरसिंह पुराण का एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और वहां पर वो कहते हैं कि किस प्रकार से उनकी तुलना की जा रही है चंद्रमा में जो धब्बे होते हैं उनके प्रकार उससे, कि इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, वो चांदनी जो चांद की चांदनी है उसमें कमी नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। So the Lord gives the Bhagavad-Gita so many assurance to recover his devotees from this conditional stage to back to Godhead. तो बहुत सुंदर विचार है ये कि भगवद गीता हमें बार बार भगवान इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस पथ पर, और कितना वो प्रेम करते हैं भक्तों से, हम देख सकते हैं कि वो आकस्मिक पतन हो जाए तो भी वो सबको बोल रहे हैं कि आप उनके प्रति उपहास मत करिए, उनको साधु ही समझिए आप। और बार बार सबको ये बल दे रहे हैं कि ये पथ ऐसा है कि कभी आकस्मिक दुर्घटना हो भी जाती है तो भी आप भगवत प्राप्ति में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, आगे बढ़ सकते हैं गंभीर होकर के, अगर पथ पर अडिग हैं तो। These material activities and their results end with when the body ends. But the Krishna consciousness, the devotional service, which a person carries again to the Krishna conscious even after loss of his body. तो भौतिक कार्यकलाप इसी शरीर के साथ में वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्य होते हैं जो जीवात्मा के साथ में, वो इस शरीर के समाप्त होने पर भी आगे बने रहते हैं। So the devotional service is always successful. There is no loss in it. और इसीलिए उसमें कोई हराश नहीं है, क्योंकि जहां पर हम रुक जाते हैं फिर पुनः उसके पश्चात उसी के आगे शुरुआत करनी होती है। तो कोई हराश नहीं है इसमें, कोई क्षय नहीं है। The Bhagavad-Gita 2.40, it is said, Neha Vikrama Nasosya Pratyavayo Navityade Swalpam Haviyasya Dharmasya Trayudo Mahavayat. Even
Yeah, 1%, 2% devotional service we started in this life. It is no loss. It will be continued in the next life. Lord gives this assurance. So it is easiest way to approach the Lord. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं 40वें श्लोक में किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस पथ पर जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी प्रयास करने पर तो उनकी महान उत्तम भय से रक्षा हो जाती है, और इसीलिए इसमें कोई हराश नहीं। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि अगर आपने 1% तक किया है तो आगे फिर आप 2% से शुरुआत करेंगे, तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है और कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। Hare Krishna Prabhuji, I will stop here. If you want to add anything, I missed some points.